parameters क्या है? First is your work. Work is very very important. Second parameter is your heat. Heat is another important. Third parameter is your internal energy. Internal energy is the third parameter. So the process which involves work plus heat plus internal energy is known as thermodynamics. एक एक करके define करेंगे क्या है इसमें. The process which involves work, heat and internal energy is known as thermodynamics. लिखो thermodynamics क्या है? This is the branch of physics. This is the branch of physics which deals with. This is the branch of physics which deals with work, heat and internal energy of a system. This is the branch of physics which deals with work, heat and internal energy of a system. Work, heat and internal energy of a system. Work, heat and internal energy of a system. तो whenever we are talking about system, chemistry में थोड़ा देखते हैं सिस्टम को बहुत टाइप का किया गया है. फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, सेकेंड इज व्हाट क्लोज सिस्टम, थर्ड इज एडियाबेटिक सिस्टम. है कि नहीं? या और कुछ है केमिस्ट्री में था? अरे केमिस्ट्री में इतना सिस्टम था कि नहीं? Yes, sir. Yes. Open system means what? The matter as well as heat exchange takes place. That is the open system in chemistry. Closed system means only heat exchange takes place, no matter. Adiabatic system means no heat, neither heat nor what matter exchange takes place. That is what adiabatic system. Clear? So in physics you are having all those, but little bit difference is there. Adiabatic is there. Adiabatic is there. Isothermal will be there. Clear? Isobaric is there. Isochoric is there. एक एक करके define करेंगे वहां पे क्या है. Understand this? So here adiabatic means perfectly insulated system is there. Clear? So let's define here work, heat and internal energy. What is that? Likho, what is work? Write down one by one. First is work. Work W. I have to calculate work W is how much. Likho. Let P is the pressure. Let P is the pressure applied on a system whose volume is V. Let P is the pressure applied on a system whose volume is V. तो यहीं पे whenever you are talking about pressure, the system means it consists of a cylindrical vessel. System में क्या है? It consists of cylindrical vessel fitted with a movable piston. Fitted with a movable piston. ये system है. ये piston आगे जा सकता है, मतलब प्रेशर बढ़ेगा, सिस्टम पीछे जाएगा तो प्रेशर घटेगा. दिस इज ए सिस्टम. इन थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में केमिकल फेनोमेनन ले रहे थे, बट यहीं पे प्योरली फिजिकल फेनोमेनन हम लेंगे. इसलिए साइन कन्वेंशन आगे देखोगे पूरा उल्टा आएगा केमिस्ट्री का. केमिस्ट्री में जो साइन कन्वेंशन लिए थे यहीं पे पूरा उल्टा आएगा. वहां पे जो पॉजिटिव था यहीं पे नेगेटिव आएगा, वहां पे जो नेगेटिव है पॉजिटिव आएगा. क्यों? बिकॉज हियर इन फिजिक्स वी आर टेकिंग फिजिकल सिस्टम. मतलब एक सिलिंड्रिकल वेसल है, एक पिस्टन, इसको पिस्टन बोलते हैं, ये पिस्टन आगे पीछे जाएगा, ये फिजिकल सिस्टम है. बट केमिस्ट्री में तुम लोग लिए थे केमिकल सिस्टम है, एक रिएक्शन करके इसका एंट्रोपी एंथैल्पी सब निकाल रहे थे. है कि नहीं? अरे ऐसे किए थे ना केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में. हुआ? क्यों इसमें साइन कन्वेंशन डिफरेंस आएगा, आगे पूरा पता चलेगा. हुआ? ये फिजिकल सिस्टम है, वो केमिकल सिस्टम है. अंडरस्टैंड दिस? इन फिजिकल सिस्टम लेट P इज द pressure applied on a system. Likho, let P is the pressure applied on a system such that P is equal F by A. A is the area of cross section. ये मेरा A है, ये area of the piston A है. इसमें इसके ऊपर F डाला गया. हुआ? तो मेरा thrust कितना मिला? F equal to PA. F equal to PA. Write down. Let del X be the small displacement. Let dx or dx be the small displacement due to this force. Let dx be the small displacement due to this force. Let dx be the small displacement due to this force. Then work done is given by
dw is equal f dot dx. Work done is given by dw is equal f dot dx. This is what f dx cos 0. F मेरा है, this is what p a dx. a into dx लिक्विड में पढ़े थे, a into dx क्या है, dv. अरे एरिया इंटू dx क्या है, dv. dv इज द वॉल्यूम. अरे dv इज द वॉल्यूम. अरे dv इज द वॉल्यूम ना, चेंज इन वॉल्यूम. एरिया इंटू dx इज योर dv, चेंज इन वॉल्यूम. लिखो dw इज इक्वल p dv. जहां पे मैं वर्क डन निकालूंगा वहां पे p dv यूज करूंगा. देयरफॉर वर्क डन इज योर p into v. नाउ इफ यू मल्टीप्लाई प्रेशर इनटू वॉल्यूम, दैट इज ऑलवेज वर्क डन. ये भी हम लोग लिक्विड लिक्विड चैप्टर में निकाले थे. w इज इक्वल pv, प्रेशर इनटू वॉल्यूम. dw is equal pdv. On integrating dw, on integrating pdv, dw का इंटीग्रेशन है w, dv का b है. तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज ऑलवेज वर्क डन. तो लिखो यहीं पे इंपॉर्टेंट चीज मिल रहा है. हो गया, w इज इक्वल pv. और ओवरऑली आई कैन से वर्क डन w इज इक्वल p del v. लिखो वर्क डन इज इक्वल p del v. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वर्क डन इज इक्वल p del v, क्योंकि यहीं पे वॉल्यूम चेंज होगा. अगर पिस्टन आगे आएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, पिस्टन पीछे जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा. इसलिए वर्क डन इज p del v. वर्क डन डिपेंड्स ऑन चेंज इन वॉल्यूम. लिखो एक एक करके. केस 1, राइट डाउन केस 1. बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस है. केस 1, व्हेन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट del v. हाँ बोलो बोलो. सर प्रेशर भी तो वेरी हो सकता है. हाँ प्रेशर भी वेरी हो सकता है, बट प्रेशर का यहीं पे कोई काम नहीं है. प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है. यहीं पे प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होगा. हुआ, यहीं पे प्रेशर इज कांस्टेंट. देखो प्रेशर को मैंने कांस्टेंट प्रेशर डाल के वर्क डन dw निकाला. अंडरस्टैंड दिस, समझ में? यहीं पे प्रेशर Yes, sir. कांस्टेंट है. लिखो प्रेशर इज कांस्टेंट हियर. लिखो व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, when volume is constant, del v is equal 0, therefore work is 0. Means if there is no change in volume, then work done is always 0. अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स में तो वर्क डन इज ऑलवेज 0. आग बंद करके 0 लिखोगे. समझ में है? लिखो राइट डाउन, व्हेन देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम वर्क डन इज ऑलवेज 0. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड. ये सब एक एक लाइन जस्ट लाइक योर व्हाट काइनेमेटिक्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क फॉर एनर्जी, ग्रेविटेशन, ये वैसे चैप्टर इंपॉर्टेंट है. हर एक लाइन में कॉन्सेप्ट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है. लिखो व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट वर्क डन इज ऑलवेज 0. इजी चैप्टर है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लिखो व्हेन वॉल्यूम इज 0 वर्क डन इज 0. केमिस्ट्री में भी किए थे, वॉल्यूम कांस्टेंट होने से वर्क डन 0 है. नेक्स्ट केस 2. केस 2, व्हेन del v is negative. नेगेटिव कब होगा? देन वर्क डन इज ऑल्सो नेगेटिव. अरे del v नेगेटिव कब होगा? del v नेगेटिव कब होगा? कब होगा? व्हेन वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. अरे जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, दैट इज व्हाट इज दैट, फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, तभी जाके नेगेटिव होगा. मतलब डिक्रीजिंग वॉल्यूम के लिए ऑलवेज वर्क डन इज नेगेटिव. मतलब यहीं पे अगर पिस्टन आगे आएगा, यहीं पे अगर पिस्टन आगे आएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव. वाह, लिखो लिखो 10 फॉर डिक्रीजिंग वॉल्यूम वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव. फॉर डिक्रीजिंग वॉल्यूम, for decreasing volume work done is always negative. For decreasing volume work done is always negative. समझ में आ रहा है? Now case 3. What is that case 3? Case 3, when del v is positive, del v is positive, that is what, increasing volume, vf is greater than vi, work done is positive. मतलब क्या है? If volume is increasing work done is always positive. अगर पिस्टन पीछे जाएगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा. लिखो when volume is increasing work done is
positive. Work done is positive. Work done is positive. अरे समझ में है? This is what about work. Next is your energy. Second part is energy of thermodynamics. Energy तो very easy, heat. First था work, second है heat. Heat क्या है? Write down. Heat is in the form of energy. लिखो second part of the thermodynamics, heat बहुत important है. Heat. This is in the form of energy which flows from high temperature to low temperature till equilibrium. Heat is in the form of energy which flows from high temperature to low temperature till equilibrium. Till equilibrium. High temperature to low temperature till equilibrium. So heat Q is equal, what you're getting? Q is equal ms del T. टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट फ्लो करेगा. टेम्परेचर डिफरेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहीं पे. इफ देर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस हीट फ्लो नहीं करेगा तो दैट इज नॉट द थर्मोडायनेमिक्स पार्ट. अरे समझ रहे हैं? लैटेंट हीट में जाएगा तो लैटेंट हीट इज नॉट इन थर्मोडायनेमिक्स. अगर डेल टी होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स में, देयर मस्ट बी टेम्परेचर डिफरेंस. क्यू इज इक्वल एम एस डेल टी. एस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, m is the mass of the substance, del T is the temperature difference. हुआ? This is what the heat. Sir, Next, हाँ बोलो. sir, from high temperature to low temperature उसके बाद Till equilibrium. From high temperature to low temperature till equilibrium. Equilibrium तक heat flow करने लगेगा. अरे समझ में है कि नहीं? हाँ, यहीं पे टेम्परेचर जितना आएगा यहीं पे उतना आएगा. टेम्परेचर डिफरेंस मस्ट बी जीरो. उसके बाद हीट फ्लो करना बंद हो जाएगा. हुआ? नेक्स्ट, थर्ड इज राइट डाउन इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी यू, ये एक नया एनर्जी आ गया यहीं पे. इंटरनल एनर्जी यू. इंटरनल एनर्जी इज व्हाट? द सम. अगर मैं एक वेसल में गैस मॉलिक्यूल रखूं, एक क्लोज वेसल में गैस मॉलिक्यूल रखूं, तो दे आर मूविंग इन ए जिगजैग मैनर. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोल रहा है द gas molecules are moving in a zigzag manner, means they possess kinetic energy as well as what? Potential energy. The sum total of kinetic and potential energy of the gas molecule is known as internal energy of the gas molecule. लिखो internal energy, the sum total of kinetic and potential energy of the system, the sum total of kinetic and potential energy of the system, the sum total of kinetic and potential energy of the gas molecule. Write down gas molecule लिखो. The sum total of kinetic and potential energy of the gas molecule is known as internal energy. So whenever you are talking about internal energy, add करोगे potential plus what is that? Potential plus what? Kinetic energy. दोनों को add करोगे. That is what internal energy of the system. Sum total of kinetic and potential energy. Understand this? तो यहीं पे देखेंगे thermodynamic variables. What are thermodynamic variable? लिखो thermodynamic variables और parameters भी बोला जाता है. Variables और parameters. Thermodynamic variables or parameters. Write down. P, V, T and U are known as thermodynamic variable or parameters. लिखो the pressure P, thermodynamic variables or parameters. Write down the pressure P, volume V, temperature T and internal energy U. The pressure P, volume V, temperature T and internal energy U are known as thermodynamic variables or parameters. Thermodynamic variables or parameters.
thermodynamic variables or parameters. Next, equation of states. What do you mean by this? Equation of state or state variables or state variables. Absolute internal energy of a gas molecule. Yes, this internal important question. Okay, this internal energy is known as absolute internal energy. Understand this? क्योंकि it is very difficult to calculate the what internal energy of a system at a given temperature. Very difficult. क्योंकि gas molecules always possess random motion. अरे एक जगह पे तो गैस मॉलिक्यूल रुक नहीं पाएंगे. So what will happen? This what overall internal energy is known as absolute internal energy of the system. So absolute internal energy is very difficult to calculate. So overally, जो rough internal energy आएगा, that is known as absolute here. That is equal to nearly equal to absolute. जैसे हम absolute refractive index of air is taken as 1. 1 तो है नहीं, 1 से थोड़ा ज़्यादा है, but 1 ले रहे हैं क्योंकि difficult to calculate because composition of air is different. अरे समझ में, इसका हालत भी वही होगा. हुआ? अरे समझ में आया प्रीतिपाल? सर यू लेंगे या डेल यू लेंगे? यू, हाँ, यहीं पे फिजिक्स में तुम यू लोगे, यहीं पे यू सिर्फ लोगे. जब एक गैस मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं हीट दूंगा, अभी हीट दूंगा तो इसमें स्पीड भी बढ़ेगा. अरे जितना स्पीड में जा रहा था और ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा. जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू यू एफ. तो इसमें हम लिखते हैं डेल यू. अगर एक्सटर्नल एनर्जी हीट दोगे तो देयर इज ए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, therefore internal energy changes. वहां पे डेल यू लिखेंगे, डेल यू इज फाइनल माइनस इनिशियल. बट जब डेफिनेशन इंटरनल एनर्जी को लिख रहे हैं तो U इज इक्वल सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक. समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? हेलो, अरे जी प्रीतिपाल, सर. ओके. जहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वहां पे डेल यू. तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में शायद सोच रहे हो. डेल यू वहां पे केमिस्ट्री में भी था. अरे डेल यू वहां पे लिखे थे, यहीं पे भी आएगा डेल यू हाँ आगे. सर, केमिस्ट्री में सर बोले थे कि एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते नहीं हैं. निकाल सकते. यस, एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. इसलिए एब्सोल्यूट जो है नियरली ये वही है. हुआ? समझ में है? अरे एब्सोल्यूट जो जी है ये सर. नियरली ये वही है. एब्सोल्यूट निकालना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि एक गैस मॉलिक्यूल को तुम व्हाट स्टॉप करना पड़ेगा उसी पोजीशन में. गैस मॉलिक्यूल नेवर व्हाट स्टॉप्स देयर, इट ऑलवेज मूव्स इन रैंडम मोशन. इसलिए एब्सोल्यूट जो है ये इसी को नियरली लिखा जाता है यू. वाह, यू इज द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी. डेल यू बाद में देखेंगे क्या है. वाह, यस, अंडरस्टैंड दिस. तो इक्वेशन ऑफ स्टेट और स्टेट वेरिएबल्स. स्टेट वेरिएबल्स क्या है? द आइडियल गैस इक्वेशन इज नोन एज, राइट डाउन, द आइडियल गैस इक्वेशन इज नोन एज equation of state or state variables. The ideal gas equation is known as equation of state or state variables. So what is that equation of state? Pv is equal nRT. n को म्यू लिखा जाता है फिजिक्स में, म्यू और n. n भी लिख सकते हो, अरे फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंट लिखते हैं. म्यू, म्यू और n, म्यू और n. n इज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स. तुम्हारा मर्जी, n भी लिख सकते हो. केमिस्ट्री में n था तो n लिख सकते हो या फिर म्यू लिख सकते हो. म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स. Pv is equal mu RT. This is what equation of state or state variables. For 1 mole of equation, for 1 mole, the equation will be changed. Pv is equal RT. This is for 1 mole. बट हम मोल लेके कैलकुलेट करेंगे. तुम्हारा बुक में सब प्रॉब्लम 1 मोल में दिया, बट मैं मोल लेके कैलकुलेट करके दिखाऊंगा पूरा एंटायर चैप्टर. वाह, अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि मोल एंट्रेंस में गिर रहा है, मोल रख के. वाह, these are what the thermodynamics parameters, and ये सब terms we are going to use here. टाइम हो गया शायद, कल कल देखेंगे. कल रोटेशन का भी देखेंगे, इसको भी आगे देखेंगे. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑल दिस वी विल सी. ओके, स्टॉप किया. बहुत सारे बच्चे भी चले गए. और कुछ डाउट नहीं किसी का भी?